Children. Today we are going to start a little discussion about the half yearly question paper of class ninth. So let's see all the questions one by one. So the question number one was in this book. It is asking the name of the book in which Montesquieu proposed a division of power between the organs of the government, that is legislative and executive. All of you know this is the book, The Spirit of Laws, right? It is written by Montesquieu. Okay. Now, question number two, find the common link in each group. So you have to identify, right? Latitude is something which is related with the duration of day, right? If we are near the equator, the length of day is more. If we go to the pole areas, you will find the length of day is reduced. So in such a way, longitude is related with time, right? So if we want to decide the time of a place, we consider longitude इन रिलेशन टू द ग्रीनविच मीन टाइम. आप सभी को पता है कि हमारे अर्थ पर जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है जो कि लंदन से गुजरती है, इसे हमने इसे हम ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं. और इसके रेफरेंस में वी आर फाइंडिंग द टाइम ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, राइट? सो करेक्ट आंसर विल बी टाइम. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, which was the political symbol that signified the personification of law, right? So personification of law means what? So कानून को एक पर्सन का रूप दे दिया गया. सो इन फ्रांस आपने देखा कि द विंग्ड वुमेन, एक लेडी जिसके पंख थे, है ना, उन्हें हमने रिप्रेजेंट किया है एज अ लॉ. क्वेश्चन नंबर 4, इट इज आस्किंग द डिफरेंस बिटवीन द थॉट ऑफ लिबरल्स एंड डेमोक्रेट्स. डेमोक्रेट्स और लिबरल्स के बीच में क्या डिफरेंस था सोच कर. सो लिबरल्स वांटेड टू give voting right to the people, but they wanted to give the voting right to the people who were having property, right? While the Democrats, they wanted to give voting right to all the people. So they did not, and liberals were not believing in universal adult franchise. So B will be the correct answer. Next question, which country among the following India's neighbor is the smallest in size? तो हमारे मैप को अगर आप ध्यान से देखेंगे, you will find that भूटान जो है वो सबसे छोटी कंट्री है हमारे नेबर्स में, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 क्वेश्चंस दिए हैं जो कि एसेशन एंड रीजनिंग के ऊपर है. एंड द क्वेश्चन नंबर 6 वाज लिबरल्स अपोज्ड अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ डायनेस्टिक रूलर. क्या ये सही है? यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. रीजन इज गिवन, दे वांटेड अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. यस, लिबरल्स वांटेड अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. सो because the liberals wanted parliamentary form of government, that's why we can say liberals oppose the uncontrolled power of dynastic rules. So both the statements are correct and R is the correct explanation of A. Question number 7, look at, it is asking that Deccan Plateau, the Deccan Plateau that is in South India, all of you know that in South India this is Deccan Plateau. It is saying that Deccan Plateau is having the slope towards west. So west is this side and east is this side. So obviously this statement is wrong. Why? Because most of the river which is following in South India, they are flowing towards east. So it shows that the slope of Deccan Plateau is towards east. So this statement is wrong. Second statement, most of the rivers in Peninsular Plateau slopes towards east. राइट? सो दिस वन इज द करेक्ट स्टेटमेंट, है ना? अभी मैंने आपको बताया ये क्यों करेक्ट है. सो इन दिस सिनेरियो A is false and R is true. Now come to the question number 8. The Constituent Assembly worked in a systematic, open and consensual manners. Yes, हमारा जो Constituent Assembly था उन्होंने काफी सिस्टमैटिक ढंग से सभी लोगों की बातों को समझ के ओपन होके उन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था. तो क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? यस, इट इज करेक्ट. Reason is given, the member deliberated for 114 days spread over 3 years. Yeah, it is approximately 3 years it took to make our constitution, and during those days 114 days all the members were made together and discuss on different issues, right? So both the statement are correct, right? And R is the correct explanation of A. So A will be correct answer. But because this question is a little bit hard, if somebody is marking option B also, we will give the marks. So if you marked option A or B, both the answers are correct.
So you will get the marks. Don't worry. Now come to the question number 9. Which act established Hitler's dictatorship in Germany? So all of you know that the name of that act was Enabling Act, right? 1933 में pass हुआ था Enabling Act. Under this act, Hitler took all the powers in his own hand, right? And he started transforming Germany from democracy to dictatorship, right? Next question. Why is India called a republic? Why we call India as a republic? Because the head of the state, that is the president of India, is an elected person. हमारे country में जो president होते हैं उन्हें elect किया जाता है हर 5 साल में. That's why we call India as a republic. Now come to the next question, question number 11. Look at this picture. We already discussed in the class that this picture is showing that money is God for Zeus people, right? देखो यहाँ पर ये Zeus people है and he is sitting over the bag of money. So this was the propaganda that was spread during the time of Hitler in Germany, right? So next question, question number 12. Which wind bring rainfall in our country? Obviously, southwest monsoon. I told you that the wind which is flowing from Arabian Sea, it goes towards like this. So this is southwest, right? This is south direction and this is west. So the wind coming from this direction, that's why we call it as a southwest wind, right? Now come to the next question, question number 13. Democracy reduce the chances of, obviously, wrong decision, because in democracy we take decision with a lot of consultation. Many people are involved in taking decisions. That's why we can say that whatever decisions we are taking in our country, there are very low chances of getting wrong. Okay. Now come to the question number 14. What is not true about the hot weather season in India? So look at the statement number 1 itself. That is A1. Land has high temperature and high pressure. So you can see, I told you that the wherever there is a high temperature, that place get always low pressure. तो जहां पर भी ज्यादा गर्मी होगी वहां पर लो प्रेशर होगा. तो यहाँ पर पहला ही स्टेटमेंट गलत है, राइट? एंड इट इज आस्किंग कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है. इट इज नॉट ट्रू. सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट. Which of the following does not include election process या procedure, right? So booth capturing, it is illegal, right? कोई कैंडिडेट या कोई भी पर्सन किसी बूथ को, पोलिंग बूथ को कैप्चर नहीं कर सकता, अपने कंट्रोल में नहीं ले सकता. सो दिस इज नॉट अ इलेक्शन प्रोसीजर. रेस्ट ऑफ देम जैसे वोटिंग हो गया, नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट हो गया, काउंटिंग ऑफ वोट्स हो गया, दीज ऑल आर इलेक्शन प्रोसीजर. सो योर करेक्ट आंसर विल बी booth capturing. Now come to the next question. Which river flows through a rift valley? Rift valley में कौन से river flow करती है? आप सभी को पता है कि दो river जो है इंडिया में वेस्ट साइड में बहती है, Narmada and Tapi. So the correct answer will be Narmada, right? Next, which body conducts Lok Sabha election in India? Obviously, Election Commission of India, right? Then question number 18. If a farmer is purchasing a tractor, which type of capital is it? It is the fixed capital, right? Why? Because this type of money which is spent on purchasing tractors, it can be used for longer period of time, right? Tractor हम बार बार नहीं खरीदते, right? तो ये machines और tools पे जो भी investment हम करते हैं वो क्या कहलाता है? Fixed capital कहलाता है. Now come to the question number 19. Two students discuss about the unemployment issue in India, है ना? दो बच्चे डिस्कस कर रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में और उसमें से एक बोल रहा है कि मोस्ट ऑफ द फार्मर इन आवर कंट्री इज ओनली वर्किंग फॉर 6 मंथ. बाकी के 6 महीने वो क्या करते हैं? घर पे अनएम्प्लॉयड रहते हैं. किस तरह का अनएम्प्लॉयमेंट है ये? Obviously this is seasonal unemployment, because all of you know that during the time of maturing period, right, the farmers are not having any work. तो उस समय वो जो अनएम्प्लॉयड होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20. डिक्रीज इन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इन अ कंट्री सिग्निफाई. अगर किसी कंट्री की इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम हो रही है, व्हाट इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट? इट इज अ रेट of the death of children within 1 year of age, right? इसी को हम infant mortality rate बोलते हैं. और अगर किसी कंट्री में बच्चे की मरने की संख्या कम हो रही है तो इसका मतलब क्या है? It means that the country is having better health service, right? Now come to the question number 21. These are these very short answer question containing 2 marks. So it is asking the difference between Himalayan and Peninsular river. So कई सारे difference हैं, जैसे कि जो Himalayan rivers होता है वो perennial होता है. That means it is flowing throughout the year. हर एक सीजन में इसमें पानी होता है. जबकि साउथ इंडिया में जो रिवर्स है वो
सीजनल होती है या फिर सीजन में कम हो जाता है, काफी कम हो जाता है पानी, राइट। दूसरी तरफ जो हिमालयन रिवर्स होती है ये काफी वाइड होती है, काफी लंबी होती है। पेनिनसुलर रिवर क्या होती है, बिल्कुल आप इनके कंपैरिजन में काफी छोटी होती है, राइट। बहुत कम इरोजन करती है ना। ज्यादा इरोजन कौन सी करती है, हिमालयन रिवर करती है, राइट। काफी सारा पानी होता है हिमालयन रिवर। सो एनी टू डिफरेंस अगर आपने लिखा है, यू विल गेट द मार्क्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, हाउ डू स्मॉल फार्मर्स इन पालमपुर अरेंज कैपिटल फॉर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, है ना। तो जो स्मॉल फार्मर्स हैं, हाउ दे आर गेटिंग द कैपिटल फॉर एग्रीकल्चर। सो व्हाई डोंट दे बोरो फ्रॉम अ बैंक, सो वो बैंक से क्यों नहीं बोरो करते हैं, कहाँ से बोरो करते हैं अगर करते हैं तो आप सभी को पता है दैट स्मॉल फार्मर इज not having loan from bank, they are taking loan from large farmer, money lenders, traders, right। क्यों नहीं बोरो करते हैं, इसके पीछे कई रीजन है, राइट। जैसे कि they are illiterate, they don't know how to apply for a loan in bank, they are having lack of awareness, उन्हें पता नहीं है कि लोन कैसे लिया जाता है। इसके अलावा आप और भी कई सारे रीजन लिख सकते हैं, जैसे they don't have collateral, उनके पास सिक्योरिटी देने के लिए बैंक को सिक्योरिटी देने के लिए किसी भी तरह का कोई प्रॉपर्टी या पेपर्स नहीं होते हैं, राइट। या फिर बैंक की जो ब्रांचेस है उनके घर के आसपास लोकेटेड नहीं है। दीज आर द रीजन द स्मॉल फार्मर आर नॉट बोरोइंग द मनी फ्रॉम बैंक। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, it is asking that what is modern farming, right, and what are the benefit of it for the farmers। so modern farming क्या है, use of modern tools, HYV seeds, chemical fertilizer, pesticides, right। so this is modern farming, right, and the benefits out of these modern farmings are it can produce more crops for the farmers, right, then everything that is plowing, harvesting, right, this process is somewhat faster, right, during the time when they are doing modern farming। otherwise जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं वो जो हाथ से करते हैं उसमें काफी लंबा समय लगता है, जबकि ट्रैक्टर्स हो गए, हार्वेस्टिंग मशीन हो गए, थ्रेशर हो गए, इनसे ये सारी चीजें बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम समय में हो जाता है, ठीक है। नाउ next question number 24, what investment can be made on humans to make it a resource। so human को एक अच्छा human resource बनाने के लिए हम किस तरह के investment कर सकते हैं। so we can do investment on education, health, right, training देने के लिए इन सारी चीजों पर जब हम खर्च करते हैं तो वो एक अच्छा human resource बन जाता है। so this is the answer। now come to the question number 25, right। so this question is asking, write the social condition of France which was responsible for French Revolution। so all of you know the society of France, three states, it was divided in three states। some of the people like clergy and nobility were enjoying very special privilege in the society, they were not paying taxes। on the other side those people who were common, they always paying taxes, and the taxes were very high, right, they were not getting any privilege। on the other hand all those people belong to nobility and clergy, they were having certain different privilege, right। so this is the answer। now come to the question number 26, it is asking the difference, what is disguised unemployment, right, and what are the disadvantages of it। so disguised unemployment, all of you know that when a person is not working at his full capacity, right, it is called disguised unemployment, right। in this type of unemployment the people are looking that he is working but in reality he is not working, right। so I gave you one example that if a farmer is having a very less amount of land and on that land he required only 4 labor but there are 10 labor are working on that field, it means that the 6 people are disguised unemployment, right, they are disguised unemployed। on the other hand it is asking what are the problems because of unemployment। so unemployment अगर हमारी कंट्री में होगा तो क्या क्या हो सकता है, पॉवर्टी होगी, राइट, हमारा इकोनॉमी डिप्रेस्ड हो जाएगा, the people who are not working they are liability on the country, right, है ना। कई सारी चीजें और भी हो सकती है, जैसे कि कोई फार्मर अगर या फिर कोई भी पीपल अगर काम नहीं कर रहा है तो उसमें सुसाइडल टेंडेंसी आ जाती है, कई सारे लोग सुसाइड कर लेते हैं। so these are the point you could write। now come to the question number 27, what problems do farmers in Palampur face in terms of employment and wages, right। employment से related और wage से related क्या problem थी, जो वहाँ के farmers थे पालमपुर के, they were not getting regular employment, कभी काम मिलता था कभी नहीं मिलता था, जो wages मिलते थे उन्हें कभी
बहुत ही कम वेजेस होते थे, है ना, उनकी जो वेज होती थी वो बहुत कम होती थी। क्यों? क्योंकि कंपटीशन काफी ज्यादा था। कई सारे लोगों को काम की खोज में एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था, अपनी फैमिली को छोड़ के शहर जाना पड़ता था। सो दीज वर द प्रॉब्लम्स टू द पीपल ऑफ or to the farmers of Palampur. Next question number 28. What were the problems that the constitution maker had to face while making the Indian constitution? So Indian constitution को बनाने के समय क्या क्या problem face किया makers ने? So simple. There were many problems. For example, at that time our democracy was very new. हमारी गवर्नमेंट बहुत नई थी, है ना, हमें उसमें पार्टीशन का सामना झेलना पड़ा था, राइट. Then there were many princely states, they were not wanted to join Indian Union, right. Apart from it, when they were making constitution, there were many issues on which people were not agreed, right. For example, some people were fighting on the issue of language, right. Some people wanted to make Hindi as the official language. On the other hand, the people who were belonging from South India, they did not wanted it. So such type of problems were faced by Constituent Assembly during the time of making constitution. So containing the provisions for the diverse country like India, it was a mammoth task, right. Now come to the next question, question number 29. Write three main functions of Election Commission of India. In this question you have to write the powers of Election Commission of India. क्या पावर है इलेक्शन कमीशन इंडिया के पास, क्या फंक्शन है उनके? द फर्स्ट फंक्शन, वेरी इजी वन, दैट इलेक्शन कमीशन is responsible for conducting free and fair election in our country, right. During the time of election commission remain in control of all the process of election, right. It is the responsible body to ensure code of conduct, है ना. If any breach happened, punishment is given by the election commission of India, right. So these are the functions of election commission of India. Now come to the question number 30, that is source based question. So in this question you can look at here, it is asking about Nazism and the rise of Hitler. Question number A, what was the main idea of Herbert Spencer? So Herbert Spencer ने क्या कहा था? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट मतलब उन्होंने कहा था कि जो सबसे ज्यादा फिट होगा वही सर्वाइव कर पाएगा, राइट. अगर अपने आप को कोई भी स्पेसीज इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट नहीं कराती है तो वो इस अर्थ पर सर्वाइव नहीं कर पाएगा. तो हिटलर ने क्या किया, उन्होंने जो जूस पीपल थे उन्हें कहा कि ये लोग फिट पीपल नहीं है और उन्होंने उसको मारना शुरू कर दिया, है ना. सो इट इज आस्किंग ओनली अबाउट द आइडिया ऑफ अल्बर्ट स्पेंसर, सो यू हैव टू राइट ओनली दिस पॉइंट. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड डार्विन एक्सप्लेन द क्रिएशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स? डार्विन ने कैसे एक्सप्लेन किया था? उन्होंने एक्सप्लेन किया था थ्रू द इवोल्यूशन प्रोसेस एंड नेचुरल सिलेक्शन. सो दिस इज द आंसर, यू रीड इट. How did Hitler base his idea of racial superiority from the theory of Herbert Spencer? तो आपको मैंने अभी जस्ट बताया, हिटलर ने क्या कहा कि जो सबसे ज्यादा फिट होगा वो सरवाइव कर पाएगा, और आर्यंस को वो सबसे ज्यादा फिट समझते थे और बाकी जो अदर कम्युनिटी थी लाइक ज्यूस पीपल या फिजिकली हैंडीकैप पीपल, उन्हें वो फिट नहीं समझता था. दैट्स व्हाई उसने उन्हें किल करना शुरू किया, राइट. सो यू राइट दिस आंसर. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 31. It is asking the rising temperature and falling air pressure is associated with which climatic season? Hot weather, right? Obviously, dry wind जो blow होती है North India में, it is called loo. काल बैसाखी is a rainy season. Basically, this is a local name given to rainy season in the state of West Bengal, right? So keep in mind. Next question number D. Mango shower occurs in which of the state? Two states. So Kerala और कर्नाटका दो स्टेट हैं जहां पर कि अप्रैल के मंथ में बारिश होती है, इसे हम मैंगो शॉवर कहते हैं, राइट. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 32. दीज आर द डायरेक्ट क्वेश्चन, आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी इसमें. लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी कितनी है हमारी कंट्री में? तो ये है 543, राइट. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमएलए एंड एमपी? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. और 3 है कौन सा इंपॉर्टेंट फीचर्स है कॉन्स्टिट्यूएंसी इन डेमोक्रेटिक इलेक्शन? तो हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में इक्वल पॉपुलेशन होती है, हर एक लोगों के वोट का इक्वल वैल्यू होता है. ये जो मेन फीचर है हमारे हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का. तो इस हिसाब से जो ऑप्शन नंबर बी है, आई थिंक ये सही होगा, राइट. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट. इफ वी से दैट टीएमसी हैज वॉन 40 सीट्स इन पंजाब असेंबली, तो इसका मतलब क्या है? टीएमसी के कितने एमएलए हैं उस स्टेट में?
40, right? So the answer, correct answer will be 40, right? Now come to the long answer questions, right? It is asking, there are two options given. Assess the social and economic consequences of Stalin's 5 year plan of Soviet Union. So स्टालिन ने 5 year प्लान लगाए थे, राइट, जब वो पावर में आया था, तो इससे क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए रशिया में, राइट? तो सबसे पहला चीज तो ये हुआ कि वहाँ की इकोनॉमिक ग्रोथ काफी हद तक अच्छी हो गई, and the production increased by 100% in oil, coal, steel. New factories were came up in the cities, right? Social consequences क्या क्या हुए? जो वर्किंग कंडीशन थे लोगों के वो खराब हो गए, वर्कर्स को काफी हार्ड लाइफ जीना पड़ रहा था, है ना? हालांकि देयर वर सर्टेन फैसिलिटीज वर गिवन बाय द गवर्नमेंट टू द वुमेन्स आल्सो, राइट, वर्कर्स आल्सो, बट इट वाज नॉट सफिशिएंट. लाइक क्रेचेस फैसिलिटीज वर बिल्ट फॉर वुमेन वर्कर्स so that children can be taught there, right? मॉडल लिविंग क्वार्टर्स वर बिल्ट फॉर वर्कर्स, एक कॉमन डाइनिंग होता था, ये सारी चीजें आप लिख सकते थे इधर. क्वेश्चन नंबर 30, इसी में दूसरा ऑप्शन भी दिया हुआ है, व्हाट वर द मेन चेंजेस ब्रॉट अबाउट द रशियन रेवोल्यूशन आफ्टर अक्टूबर, राइट? सो आप सभी को पता है उन्होंने क्या किया, वर्ल्ड वॉर से बाहर निकल गए, एंड दे नेशनलाइज द बैंक्स, राइट? दे ट्रांसफर्ड द लैंड फ्रॉम द रिच पीजेंट्स टू द पुअर पीजेंट्स, है ना? न्यू आर्मी ड्रेसेस वर डिजाइंड, है ना? ये सारी चीजें आपको उधर लिखनी थी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट 5 इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ रिवर्स एंड लेक्स. दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन. लेक्स किस चीज के लिए बहुत ही इकोनॉमिक बेनिफिट क्या होता है लेक्स का? हम फिशिंग कर सकते हैं, टूरिज्म के लिए प्रमोट कर सकते हैं, इरिगेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, राइट? सो दीज आर दी बेनिफिट्स ऑफ रिवर्स एंड लेक्स. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 35. How was the northern plain of India formed? Northern plain of India is formed because of the interplay of the three rivers Ganga, Brahmaputra and Yamuna. आप सभी को पता है इन तीनों रिवर्स ने जो डिपोजिशनल वर्क किया, जो मिट्टी यहाँ पर डिपॉजिट की, उसकी वजह से ये नदर्न प्लेन फॉर्म हुआ है, राइट? इट इज आस्किंग द फीचर्स ऑफ नदर्न प्लेन. आप सभी को पता है कि जो नदर्न प्लेन है उसके कई सारे फीचर्स हैं, कुछ एरिया प्लेन है, कहीं पर भाबर है, कहीं पर तराई है, बांगर, खादर. तो थोड़ा बहुत इसके बारे में आपको लिखना था इस क्वेश्चन में. ऑल ऑफ यू नो खादर बांगर क्या है, भाबर रीजन क्या है, तराई क्या है, राइट? ओके. Now come to the question number 36. Democracy is considered to be the best form of government. क्या डेमोक्रेसी बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है? यस. तो आपको डेमोक्रेसी के फेवर में जो आर्ग्यूमेंट्स थे वो आपको लिखने थे, राइट? जैसे कि डेमोक्रेसी जो है मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छा कर देते हैं, यहाँ पर जो डिफरेंसेस होते हैं उन्हें काफी अच्छे तरीके से डील की जाती है, डिग्निटी ऑफ सिटीजन प्रोटेक्ट की जाती है. इसके अलावा और आपने जो पॉइंट बुक से लिखे हैं, that point मैंने आपको मेंशन भी कराया था during the classes, right? So that point you can also include in this question, right? So this was the answer of this question. Now come to the map work. Map work में आपको मार्क करना था अलाइड पावर और सेंट्रल पावर को, राइट? सो आप कोई सी भी कंट्री आपने अगर मार्क किया है, चाहे फ्रांस हो गया, राइट, है ना, ये अलाइड पावर में फ्रांस, ब्रिटेन, बेल्जियम, इटली, राइट, ये सारे कंट्री में से कोई सा भी कंट्री आपने मार्क किया है तो आपको मार्क्स मिलेगा. या सेंट्रल पावर में जर्मनी, ऑस्ट्रो हंगरी, ऑस्ट्रिया या हंगरी हो गया, है ना, बुल्गारिया हो गया, ओटोमन एम्पायर हो गया, ये सारे रीजन अगर आपने मार्क किए हैं यू विल गेट द मार्क्स, राइट? नाउ कम टू द नेक्स्ट वन. सांबर लेक आपको पता है कि ये कहाँ है? राजस्थान में है, राइट? स्टैंडर्ड मेरिडियन एक लाइन है, एक लाइन खींचनी थी आपको जो कि कहाँ से पास करती है? 82 डिग्री 30 मिनट से, राइट? उसके बाद सतपुरा रेंज इज समवेयर हियर, राइट? आपको सतपुरा रेंज मार्क करना था. सो दैट वाज ऑल. थैंक यू.